Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students and other fellow listeners, hope that you all are feeling well. Let us have a debate on entitled theme, Concept and Meaning of Exceptionality. As we know that there are 5 fingers in the hand, but all are not equal. It means individual differences are always existing. हर कोई इंडिविजुअल एक दूसरे से मुख्तलिफ है. I mean to say you different है. We are different in terms of capacities and capabilities, interests and motives, wills and wishes, attitudes and aptitudes. In all respects, we are different. जब हम स्पेशल एजुकेशन के प्रिज्म से देखते हैं, individuals are unique because they possess unique characteristics, unique futures, या हम कह सकते हैं they possess exceptional characteristics. Now question arises, what is exceptionality? Whom we called exceptional children. Dear students, exceptional children, इन्हें हम special children भी कहते हैं. These are those children who are deviated from the normal in terms of intellectual aspect, physical aspect, emotional and social aspect. ये नॉर्मल बच्चों से डिफरेंट होते हैं. चाहे हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट, जिसे हम मेंटल एस्पेक्ट भी कहते हैं, उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे, दे आर डिफरेंट. फॉर इंस्टेंस, नॉर्मल बच्चों का IQ 90 to 100 होता है और एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जो है, दे हैव IQ either 140 above, whom we called gifted or talented children. और इस डिविएशन को हम कहते हैं पॉजिटिव डिविएशन. एंड ऑल्सो देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जिनका IQ 70 से बिलो होता है. वी कॉल देम नेगेटिवली डिवेटेड, फॉर एग्जाम्पल मेंटली रिटार्टेड. तो नर्शल में हम कह सकते हैं जो बच्चे कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे डिफरेंट है नॉर्मल से, either we call them positively deviated exceptional children or we call them negatively deviated exceptional children. On the basis of physical aspect, we can also categorize exceptional children. Dear students, नॉर्मल बच्चे वो बच्चे हैं who do not have any physical deformity or sensory deformity. But while as on the other hand, on the basis of physical aspect, exceptional children show the deviation. जैसे कि physically handicapped, जिन्हें हम locomotor disabled exceptional children कहते हैं, या ऑर्थोपेडिकली impaired भी हम उन्हें कहते हैं. These are those children who possesses defect or deformity in bones and joints. Dear students, sensory defective exceptional children are those children who possesses defective sensory organs. इनके सेंस ऑर्गन्स में डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, such as visually impaired, hearing impaired, and speech impaired. As we know that senses are called the gateways of knowledge. It means every bit of knowledge is received through different sensory organs. लेकिन जो sensory defective बच्चे हैं उनमें सेंस डिफेक्ट पाया जाता है, सच एज विजुअली इंपेयर्ड, जिनमें डिफेक्टिव विजन होता है. दे आर नॉट एबल टू
see the things or perceive the things because due to the visual impairment. इसीलिए इस पॉपुलेशन को एक्सेप्शनल पॉपुलेशन कहा जाता है. एंड ऑल्सो हियरिंग इम्पेयर्ड, ये वो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन हैं जिनमें डिफेक्टिव सेंस ऑफ हियरिंग होता है. दे आर नॉट एबल टू हियर, वो साउंड्स नहीं सुन पाते हैं. बाय एंड लार्ज स्पीच इम्पेयर्ड हु हैज डिफेक्टिव स्पीच, यानी कि कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, या हम कह सकते हैं फ्लुएंसी डिसऑर्डर, इन द फॉर्म ऑफ स्टटरिंग एंड स्टैमरिंग. So these all categories are called the exceptional children. We will highlight major definitions of exceptionality. Number 1, general definition. Exceptionality refers to the state or quality of being exceptional, deviating from the norm, or standing out from what is typical or ordinary. यानी कि these are those children who show the deviation from the norm. What is norm? Norm is basically standard or rule by which we measure or assess exceptionality. यानी कि जो बच्चे किसी भी एस्पेक्ट में नॉर्मल बच्चों से अबो है उन्हें हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहते हैं, या वो बच्चे जो नॉर्मल बच्चों से बिलो है उन्हें भी हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहते हैं. फॉर इंस्टेंस, अगर हम कॉग्निटिव प्रोफाइल की बात करेंगे, आई मीन टू से यू इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस इज द कॉग्निटिव एबिलिटी possessed by an individual, और हर एक इंडिविजुअल के पास अपना कॉग्निटिव प्रोफाइल है. जो बच्चे पॉजिटिवली डिवेटेड होते हैं, दे हैव एडवांस्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनका ब्रेन हाइपर सेंसिटिव होता है. जैसे कि गिफ्टेड, उन्हें टैलेंटेड चिल्ड्रन भी कहते हैं. गिफ्टेड बच्चे जो है उन्हें एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहा जाता है क्योंकि उनमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत हाई होती है. द IQ रेंज ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन इज above 140, इसीलिए हम इन्हें पॉजिटिवली डिवेटेड बच्चे कहते हैं. इनका बिहेवियर फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिवेटेड होता है. इसी तरह से वो बच्चे जिनका IQ नॉर्मल से बिलो होता है उन बच्चों को हम कहते हैं नेगेटिवली डिवेटेड एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, सच एज मेंटली रिटार्टेड. देयर स्टूडेंट इज मेंटली रिटार्टेड, बच्चों का IQ 70 बिलो होता है. इसीलिए हम टेक्निकली डिफाइन करते हैं मेंटली रिटार्टेड चिल्ड्रन आर दोज एक्सेप्शनल चिल्ड्रन हु possesses IQ less than or below than 70 on the basis of physical aspect. अगर हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे नॉर्मल बच्चे वो बच्चे हैं who do not possess any physical or sensory deformity, but keeping in view the exceptional children, जिन्हें आप स्पेशल चिल्ड्रन भी कह सकते हो या डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन भी कह सकते हो. दे हैव फिजिकल डिफॉर्मिटी और सेंसरी डिफेक्ट्स. फिजिकल डिफॉर्मिटी में लोकोमोटर डिसेबल्ड बच्चे आते हैं जिन्हें हम ऑर्थोपेडिकली इंपेयर्ड बच्चे कहते हैं. इसी तरह से सेंसरी डिफेक्ट में विजुअली इंपेयर्ड हु possesses डिफेक्टिव सेंस ऑफ विजन, या हियरिंग इंपेयर्ड हु possesses डिफेक्टिव सेंस ऑफ हियरिंग. बाय एंड लार्ज स्पीच इंपेयर्ड एज वेल, जिन बच्चों में डिफेक्टिव स्पीच होती है यानी कि फ्लुएंसी और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर पाया जाता है. ऑल द चिल्ड्रन आर कॉल्ड द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, या हम कह सकते हैं सेंसरी डिफेक्ट्स की बुनियाद पे इन्हें एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहा जाता है. इसी तरह से लर्निंग डिसेबल्ड. अपार्ट फ्रॉम लर्निंग डिसेबल्ड, there are other categories of exceptional children.
लाइक सोशली डिवेंट, जिनमें एंटी सोशल बिहेवियर पाया जाता है, लाइक डेलिक्वेंट्स। दिस वॉज एक्चुअली द जनरल डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्शनलिटी। किस तरह से जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन है वो डिवेटेड होते हैं ऑन द बेस ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट, सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट फ्रॉम द नॉर्मल। नंबर सेकंड, एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे, whom we called the exceptional children, किन बच्चों को हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कह सकते हैं, यानी कि these are those children who possesses unique exceptional needs and characteristics। उन बच्चों को हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहते हैं, यानी कि एक्सेप्शनल बच्चों की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती है फ्रॉम द नॉर्मल चिल्ड्रन। लेकिन जब हम ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखते हैं, within the spectrum of exceptionality, exceptional children also deviate themselves। ये कैटेगरी टू कैटेगरी डिफरेंट होते हैं। आई मीन टू से यू, एक एक्सेप्शनल कैटेगरी की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती है दूसरे एक्सेप्शनल कैटेगरी से। फॉर इंस्टेंस, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, दे हैव देयर ओन नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, और उनकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स मेंटली रिटार्टेड से डिफरेंट है। व्हाट द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मेंटली रिटार्टेड, दे मे नॉट सूट टू द गिफ्टेड चिल्ड्रन। इसी तरह से विजुअली इम्पेयर्ड, जिनमें डिफेक्टिव विजन पाया जाता है, उनकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती है फ्रॉम अदर कैटेगरीज। चाहे गिफ्टेड बच्चे हैं, मेंटली रिटार्टेड है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड है, स्पीच इम्पेयर्ड है, तो नटशल में हम कह सकते हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन न सिर्फ उनकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती है नॉर्मल से, बल्कि वो एक दूसरे से भी डिफरेंट उनकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स होती है। नंबर थर्ड, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। डियर स्टूडेंट्स, जब हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आर दोज चिल्ड्रन हु possesses एक्सेप्शनल ट्रेट्स और क्वालिटीज, या हम कह सकते हैं बिहेवियर्स। जिन बच्चों में एक्सेप्शनल ट्रेट्स पाए जाते हैं, क्वालिटीज पाई जाती है, या ओवरऑल बिहेवियर पाया जाता है, उन बच्चों को हम कहते हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। क्वालिटीज लाइक इंटेलिजेंस, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड एंड अदर ट्रेट्स, चाहे बिहेवियरल ट्रेट्स है, इमोशनल ट्रेट्स है, सोशल ट्रेट्स है, so on and so forth. This was all about the today's lecture. In next lecture, we will discuss need and scope of exceptionality. If you really enjoyed my lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.